Good morning, students. Today we learn about the method of separation. Okay, in last period we see about the soluble, insoluble substance. Okay, and their mixtures. The two types of mixtures: homogeneous, heterogeneous. And what about? Also, we studied about the solute, solvent, and solubility. Okay, so today we see the methods of separation. See, uh, you know, we make the solution by dissolving solute in the solvent. Okay, but when we want to separate it, then we separate it by different methods. हम उसको separate करने के लिए different method use करते हैं. तो कैसे कर सकते हैं हम separations? See, there are the various methods used to separate substance, but the method to separate soluble substance are different from method used to separate insoluble substance. In last period we see the soluble substance and insoluble substance. Soluble substance means what? The substance that dissolve in the liquid is the soluble substance. जो substance उसमें ऐड करने के बाद dissolve होता है उसको क्या कहते हैं? Soluble substance. And insoluble substance means what? The substance that not dissolve in the liquid, means वो dissolve नहीं होता. Okay, so उसके मेथड्स डिफरेंट है. जैसे कि देखो, रिमूविंग सोल्यूबल इम्प्योरिटी. जो सोल्यूबल इम्प्योरिटी देन कैन बी रिमूव बाय द इवापोरेशंस. जो सब्सटेंस डिजॉल्व हुआ है पानी में वो हम सेपरेट कर सकते हैं इवापोरेशन मेथड से. जैसे कि हमने देखा कि जैसे वाटर एंड साल्ट इज द होमोजीनियस मिक्सचर. हम अगर साल्ट वाटर में डालेंगे तो क्या होगा? डिजल होगा. मीन्स इट अ सोल्यूबल सब्सटेंस. बट व्हेन यू वांट इज सोल्यूबल इम्प्योरिटी देन यू use the evaporation method. What you do in evaporation method? Evaporation means what? The process of changing water into water vapor. वाटर को अगर हम बॉईल करेंगे तो उसको कन्वर्सेशन किस में होगा? वाटर वेपर्स में. Okay, if you heat the liquid then it convert into water vapor. When water evaporate soluble impurity are left behind. उसकी जो नीचे जो soluble impurity रहती है वो नीचे रह जाएगी. जैसे कि देखो यहाँ पे salt and water का mixture से solutions. If we heat it then what happened? That liquid means that water is evaporated. Okay, and the salt that dissolve in the liquid is remain at the bottom of the that beaker. Okay, उसपे वो salt जो रहते हैं वो लेफ्ट रहते हैं यहाँ पे. मीन्स इन दिस वे वी कैन सेपरेट इट. ओके, सो ये हो गया सोल्यूबल इम्प्योरिटी. बट इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी कैसे सेपरेट करेंगे? इनसोल्यूबल मीन्स व्हाट? जो सब्सटेंस उसमें डिजोल्व नहीं होते. जैसे कि सैंड है. सैंड इज नॉट डिजोल्व इन द लिक्विड. देन हाउ यू कैन सेपरेट इट? So separate the impurity in insoluble impurity can be removed by sedimentation and decantation. Sedimentation and decantation or filtration process. So sedimentation and decantation process we use for the insoluble impurity. Take a water, mix with little sand. In the water, the sand is mixed. In the water, this means sand is mixed. Then what happened? Let it stand for undisturbed for a few minutes. उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसको सेटल होने देना है. So after some time you will see that the heavier sand or mud particles settle down at the bottom of container. उस पे जो मड पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या रहता है? यहाँ पे सेटल हो जाते हैं. ओके, मीन्स सेडिमेंट्स उसमें सेपरेट हो जाते हैं. ओके, यहाँ पे वो सेटल हो जाते हैं. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. ओके, sediments means what? Small particles. So you will see that heavier sand settle down at the bottom of container as the sediment, and this process is called sedimentation. So now carefully
After that what happen, it pour out into another flask. It pour out on the another separate container, and this process is called decantation. उसको क्या कहते हैं? Decantation process. When you pour that liquid into another beakers, then the sediment is settled at the bottom. This process is called decantation process. Adding alum into impure water improve the rate of sedimentation. Alum is the small particle, like the one type of chemicals. When you add the alum into that impure waters, then that rate of sedimentation is increase. उसका rate जो है तो fast हो जाता है, मतलब fast sedimentation process होती है. हाँ, so alum particles attach themselves to the impurity and make them heavier. So this process is called loading. उसमें से क्या हो जाता है, जो अलम पार्टिकल्स रहते हैं ना, वो इम्प्योरिटी को अटैच हो जाते हैं. सो एंड मेक देम हेवियर, उसके वो हेवी हो जाते हैं. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लोडिंग. उसको क्या कहते हैं? लोडिंग. सी दिस हियर. इन दैट मडी वाटर व्हेन एलम इज मिक्स, देन व्हाट हैपन, जो इम्प्योरिटीज है वो हेवी होके सेटल डाउन हो जाती है, और उसको प्रोसेस को क्या कहते हैं? लोडिंग प्रोसेस. Okay, do you understood this process? Means you have to separate insoluble substance by sedimentation and decantation processes. See, next is the filtration. Filtration is the most important method that we use in a daily life also. Okay, we in at home also we filter the water, okay, or some different liquids to remove the impurity. So in the impurity, like leaves float on the water, some impurity do not settle down easily. These impurity can be separated by filtrations. जो impurities settle down नहीं हो सकते easily, okay, जो soluble हम जैसे देखे soluble impurities क्या होते हैं, वो settle down हो जाते हैं, okay, उसको बाय फिर हम उसको sedimentation प्रोसेस यूज करके सेपरेट कर सकते हैं. सो this impurity process, the impurity can be separated by filtration. So in this process what you want, impure liquid is allowed to pass through sieve और filter paper. यहाँ पे देखो ये क्या है, कोनिकल फ्लास्क है, उसमें फिल्टर पेपर रखा है. उसमें फिल्टर पेपर रखा है, और उसमें से हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो सॉल्यूशंस रहता है इम्प्योर लिक्विड, ये उसने पास करते हैं. यू हैव टू पास थ्रू दिस फिल्टर पेपर. सो आफ्टर सम टाइम दिस फिल्टर पेपर हैज़ अ वेरी टाइनी पोर्स. सो दिस फ्रॉम द टाइनी पोर द लिक्विड is filtered, okay, and in the another conical flask that liquid is settled here, and that impurities collect inside that filter paper. वो जो इनसाइड फिल्टर पेपर पे जो रहता है ना, जो इम्प्योरिटी हो उसमें कलेक्ट हो जाती है. ओके, सो दिस इज द फिल्ट्रेशन पेपर. I again repeat it. It is the filtration process. Here we use the filter paper, and this filter paper is fold and it kept in that funnel. Okay, and pour the mud water into the funnel, and this water, clean water, is passes through the filter paper and into the beaker. Okay, so in this way we can separate the insoluble impurities from the water. So do you understand? For this you have to read it properly and carefully. Okay, so see here our this lesson is finished. Okay, here some keywords are given, so you have to read it carefully. Today I send a video and also question answers of that lessons. So you have to write it in your notebook. Thank you.